श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए श्लोक जो कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताए थे, वो कैसे हमारे लिए मैनेजमेंट में उपयोगी हो सकते हैं, वो हम देखते हैं। श्लोक है, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हे कर्मणः शरीरस्यापि च तेन प्रसिद्धि येद कर्मणः। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इसमें मैनेजमेंट का सूत्र है कि श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मनुष्यों को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी का धर्म है कि विद्या को प्राप्त करे, सैनिक का कर्म है कि देश की रक्षा करे। जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वो लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण संभव ही नहीं है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य तय है उसे वो करना ही चाहिए। जैसे कि आप कहो कि भिखारी कर्म नहीं करता, वो भी एक कर्म ही करता है, तभी उसका पालन पोषण हो पाता है। अगर वो भीख मांगना छोड़ दे, बैठ जाए, तो निश्चय ही उसका पालन पोषण संभव नहीं हो पाएगा। So let me try to explain this in English as well. I would try to give you meaning one by one, just like niyatam is like constantly defined, kuru means perform your karma, karma means that duties, your duties is called karma, tvavyam means you, karma it's action, it's jagga like superior, and so the meaning of this is that until the mind and intellect reach a state where they are absorbed in God consciousness, physical work performed is an attitude of duty is very beneficial for one's internal purification. Hence, the Vedas prescribe duties for humans to help them discipline their mind and sense. In fact, laziness is described as one of the biggest pitfall on the spiritual path. There is a shloka in that it's called Alasya hi manushyanam sarirasyo mahaniripu. So it means that laziness is the greatest enemy of humans and is especially pernicious since it resides in their own body. Work is their most trustworthy friend and is a guarantee against a downfall. Even the basic bodily activities like eating, bathing, and maintaining proper health require work. These obligatory action is called nitya karma. The neglect these basic maintenance activities is not a sign of progress, but an indication of slothfulness leading to emaciation and weakness of the body of and mind. On the other hand, a cared for and nourished body is a positive adjunct on the road to spirituality. Thus, the state of inertia does not lend itself either to material or spiritual achievement. For the progress of own soul, we should embrace the duties that help and evaluate the purity of our mind and intellect.